Assalamu alaikum students. Today we are going to cover the details of international finance, and before going into the details I would like to discuss the basic theme behind international finance, and we will discuss what is international finance actually, and then you would be able to go into the detailed theories and everything and calculations about international finance. So before jumping into the calculations and everything, I would like you to understand the main concept of international finance. It involves a different concept, but first of all you should know what are MNCs. When we will use the term MNCs, so that will reflect that it is multinational companies, and then you would be able to identify what are multinational companies and what are their goals. And then when you will be clear about the concept of multinational company and its goals, then we will move on the basic theories that why international business started in the whole world. Now, getting to the definition of multinational companies. Multinational companies are defined as firms that engage in some form of international business. Their managers conduct इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो वो कंपनीज जो इन्वॉल्व हो रही हैं किसी भी फॉर्म में इंटरनेशनल बिजनेस में, दे आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज. ऑन दी अदर हैंड जो उसमें मैनेजर्स अवेलेबल हैं, जो ड्यूटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजर्स. What their goals are, first of all, they will make international investment and financial decisions. Their objective is to maximize the value of the firm. Whatever value the company has obtained in the domestic economy. Now, since they are going to international standards, company domestic level से international level पे move कर रही है, या फिर आप international standards पे अपना business open कर रहे हैं, in that case आपके managers के जो goals हैं, that is to maximize the value of the company. Usually it involves exporting the products or importing the supplies for your business. Now, once you have started your business in your own country, in the domestic economy, what will happen that, for example, you have achieved very successful rates in your domestic economy and you are getting a lot of profits from the domestic economy. So usually it happens that people think अब हमें इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ मूव करना चाहिए, बिकॉज आपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में ग्रोथ रेट्स अचीव कर लिए हैं, आपको बहुत प्रॉफिट्स हो रहे हैं और आपको ये पता है कि बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा है. सो देयर आर ब्राइट चांसेस दैट यू कैन गो ऑन international standards and now you can move on towards the international business. Now, after maturing your business in domestic market, the company can distribute their products in many markets or in many countries. For example, you can take the example of Coke. Coke कितने countries में जा रही है? Coca-Cola is the famous product and it is going in so many countries. Now, when you are dealing with that type of product, जब आपके पास आपका product बहुत countries में जा रहा है, so आपके जो financial managers हैं या आपकी जो company है, they are not only dealing in different countries, but they are also dealing with different types of currencies. For example, Coca-Cola is a famous product and it is going into many countries. So when you focus on that simple one product, that is Coca-Cola, so it is going in different countries. So the manager and the company, they are not dealing only with one country, but they are also dealing with all those currencies in those countries where they are basically exporting their product. So whenever you are talking about international business, being a student of international finance, you must keep it in your mind कि सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस से कंसर्न नहीं, हमारा मेन कंसर्न उनकी कैश फ्लोज के साथ है, उनके कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज के साथ है. Now, when we will be moving on towards the main text, there are some terms which I will be using quite oftenly. One of them is subsidiary managers or subsidiary companies. So first of all, I would like you to understand the concept of subsidiary managers and subsidiary companies. So a subsidiary company is one that is a sister or child company of another, usually large company. So
व्हाट इज अ सब्सिडरी कंपनी? किसी भी लार्ज कंपनी के साथ इसकी पेरेंट कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है लार्ज कंपनी, वो दैट विल बी कॉल्ड द पेरेंट कंपनी, उसके साथ एक स्मॉल कंपनी जो वर्क कर रही है या उसके साथ सेम लेवल के ऊपर जो दूसरी कंपनी उसके साथ उसी की ही दूसरी कंपनी जो काम कर रही है जो पेरेंट कंपनी के अंडर आती है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टर और अ चाइल्ड कंपनी फॉर अनदर यूजुअली large company. So let's say there is a company X, let's take that example. Company Y is another company owned by company X. So we are using the term owned by company X. Therefore company Y is a subsidiary of company X. So let's discuss about the multinational company. So multinational company is where your business is involved some kind of international products and they are sending or buying international products. So that is, you are involving yourself into international business. So what are the goals for multinational companies? The commonly accepted goals of multinational company is to maximize shareholders' wealth. Now, who are the shareholders? Let's make a difference between shareholders and bondholders. Whenever we will be using the shareholder term, so shareholders are the owner of the companies in a term, say for example, आपने किसी कंपनी के 5% shares खरीदे हैं. In that regard, you are 5% owner of that particular company. So it depends on the percentage of the shareholding you are having. जितने shares आपके पास होंगे आप उतनी ही percentage के साथ उस कंपनी के ओनर हैं. However, if you are having a bonds for specific companies, you are not supposed to call yourself as an owner of that company because bonds जो हैं they are debt obligations. However, shareholdings जो आपकी हैं या shares जो हैं वो आपको provide करती हैं ownership in that company for that particular percentage जो आपके पास share उस कंपनी के मौजूद हैं. So the commonly accepted goal of a multinational company is to maximize shareholders' wealth. आपकी common goal जो multinational companies के हैं उनमें shareholders की wealth को increase करना उनका main objective है. अब obviously shareholders की wealth तब increase होगी जब आपकी company की value increase होगी. So जो दो main objective multinational companies के हैं, one company की अपनी value increase करना, second आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. एंड देन वी विल आल्सो फोकस ऑन दोज मल्टीनेशनल कंपनीज दैट होली ओन देयर ओन फॉरेन सब्सिडरीज. Financial managers throughout the multinational companies have a single goal of maximizing the value of entire multinational companies, and managers are supposed to make the decisions that can maximize the stock price and therefore serve the stockholder. So as I discussed earlier कि जो आपके international financial managers हैं उनके main दो objectives क्या हैं? First of all कि आपने जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आपने उस कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करनी है. सेकंड ऑब्जेक्टिव कि जब आप कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली शेयर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी. सो इन दैट रिगार्ड दीज टू ऑब्जेक्टिव्स आर लिंक्ड कि आपको कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करनी है. अगर कंपनी फ्लरिश करेगी तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी. What will happen? जब कंपनी के शेयर वैल्यूज इंक्रीज होंगी तो उस केस में आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा पे करेंगे. जब आप डिविडेंड ज्यादा पे करेंगे that will obviously lead to the phenomena where you want to have your goal that you want to maximize the value of your entire MNC and then increase the wealth of shareholders. So आपको कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करनी है and then when you increase the value उसी वजह से आपके शेयर की वैल्यूज बढ़ेंगी. शेयर की वैल्यूज ज्यादा होंगी तो आपको अपने ऑब्वियसली प्रॉफिट्स शेयर करने हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ. यू विल पे मोर डिविडेंड्स टू योर शेयर होल्डर्स एंड देन इट विल मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ योर शेयर होल्डर्स. When a company's shareholders differs from its managers, a conflict of goal can exist and that is called your agency problem. अब आप अपने माइंड में एक चीज रख लें कि जो आपकी कंपनी के ओनर्स हैं वो तो हमने कहा शेयर होल्डर्स हैं. यूजुअली जो आपके कंपनी का कंप्लीट ओनरशिप आपको चाहिए होती है तो यू मस्ट हैव मोर देन 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग इन पर्टिकुलर
कंपनी, तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या उनको फॉर्म कर सकते हैं, एंड देन बेसिकली यू आर रनिंग और मैनेजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ योर मल्टीनेशनल कंपनी. वन थिंग, अगर तो आपके शेयर होल्डर्स या जो आपकी ओनरशिप है कंपनी की वो आपके मैनेजर से डिफरेंट है, दैट मीन्स शेयर्स किसी एक के पास हैं और मैनेजर कोई और है, व्हाट विल हैपन इन दिस केस? ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बिकॉज मैनेजर की तो ये जॉब है कि उसने कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करनी है. ऑन दी अदर साइड मैनेजर ऑल्सो डू हैव द ऑब्जेक्टिव कि मैनेजर ने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है. सिंस इट्स अ कॉमन वर्ल्ड वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप हर एक को ट्रस्ट नहीं उस तरह से कर सकते फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भी, कि अगर आपकी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर वेदर ही इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ योर कंपनी और ही इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ. अगर तो फाइनेंस मैनेजर इज मोर इंटरेस्टेड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ his own wealth rather than increasing the value of your shareholders, it means that he is working in some other direction. What will happen? Obviously shareholders want increased value of the company and increased value of their own wealth. However, if manager wants something else, if he want more packages, more remuneration packages and more benefit, in that case he will be looking after for those opportunities के जहाँ पे वो अपने benefits achieve कर सकते हैं for any reason. If that is the case और आपके जो finance manager हैं, he is basically more interested into his own goals rather than your company's and your shareholders goals, what will happen? Obviously आपके manager की opinion में और आपके shareholders की opinion में difference होगा. जब difference आपकी opinions में आएगा, that will create a conflict. That conflict is called agency problem. So when what happens कि आपके मैनेजर की ओपिनियन में और आपके ओनर्स की ओपिनियन में डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम. Now this is the criteria by which you can understand the whole concept of agency problem. One thing, when there is written on the leftmost side is principal, so principal को आप ओनर कंसिडर करें या शेयर होल्डर्स कंसिडर कर लें. ओनर हायर्स, on the second step, owners hire agents and agents are your managers. So principal usually hire agents, or in other words managers are hired by your shareholders. So shareholders आपके managers को hire करते हैं. Why they hire finance managers? Because वो चाहते हैं कि finance manager आपकी कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करें और अपनी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करते हुए साथ ही साथ इतने प्रॉफिट्स जनरेट करें कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी इंक्रीज हो जाए. सो होल साइकिल वर्क्स इन अ वे जहां पे प्रिंसिपल या आपके शेयर होल्डर्स या आपकी कंपनी के ओनर्स आप कह लें हायर करते हैं मैनेजर्स को हु आर वर्किंग एज एजेंट फॉर योर कंपनी, जो आपके फाइनेंस मैनेजर्स हैं. उन फाइनेंस मैनेजर्स से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो आपकी कंपनी की वेल्थ को और आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करेंगे. इफ दे डोंट डू दैट, व्हाट विल हैपन कि आपके एजेंट्स और प्रिंसिपल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन होगा, दैट विल क्रिएट एजेंसी प्रॉब्लम. For example, let's think about the finance manager's point of view. Say, for example, आपके जो finance manager हैं, he's taking a decision to establish a subsidiary in one location versus another. Maybe based on the location's appeal to a particular manager rather than on its own potential benefits to shareholders. अब क्या है कि आपके finance manager एक decision लेना चाहते हैं to establish a subsidiary किसी एक लोकेशन पे. However, it is basically the objective or there is some benefit to that particular manager rather than shareholders. Shareholders की willingness नहीं है that they should open up another intermediaries on a different location. So आपके जो finance manager हैं, it's his objective for any reason there might be some benefit for the finance manager. तो finance manager interested है to open up a new subsidiary or establish a subsidiary in one location or rather than the other one.
तो दो प्लेसेस में कंपैरिजन है। मे बी आपके शेयर होल्डर्स किसी एक जगह पे चाह रहे हैं, जबकि आपके फाइनेंस मैनेजर किसी दूसरे एरिया में सब्सिडरी लॉन्च करना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं फॉर हिज ओन बेनिफिट। व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की और फाइनेंस मैनेजर की ओपिनियन में डिफरेंस आ रहा है, एंड दैट डिफरेंस विल बिकम अ कॉन्फ्लिक्ट एंड कैन कॉज टू द एजेंसी प्रॉब्लम। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल कि अगर आपके फाइनेंस मैनेजर एक और डिसीजन लेना चाह रहे हैं, दैट इज अ डिसीजन टू एक्सपैंड द सब्सिडरी मे बी मोटिवेटेड बाय मैनेजर्स डिजायर टू रिसीव मोर कॉम्पनसेशन रादर देन टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। सो अब आपके फाइनेंस मैनेजर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सब्सिडरी है उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। What will happen? Maybe shareholders के लिए उसकी expansion matter नहीं करती because the profit this subsidiary is generating is enough and is according to their expectation. मगर आपके जो finance manager हैं, he wants to get more compensation packages and in that regard he wants to expand the size of the subsidiary. आपकी company जो subsidiary company है उनका size increase करना चाह रहे हैं। What will happen? Obviously a conflict between finance manager and your shareholders or the owner of the company. That difference of opinion will cause a conflict and will lead to the agency problem. So I hope you would be clear about the concept of agency problem, which is basically when the shareholders and managers or the finance manager have different opinions and due to that different opinions the conflict of interest arises, और जब आपके पास conflict of interest arise करता है आपकी organization में, that is called agency problem. Whenever there are agency problems related to your business, so obviously it hurts you and you want to basically eliminate those problems from your company. So let's consider that you are having different subsidiaries in your company while there is one parent company who is looking after all the subsidiaries. Say for example parent company के पास A, B और C companies हैं as subsidiaries. What will happen? When you want to eliminate agency problem, जब आप agency problem को ख़त्म करना चाहते हैं अपने business से, so obviously nothing is free in this world. You have to involve some kind of costs to monitor those companies. आपकी जो monitoring होगी उस company के, उससे related जो costs related होंगी, they will be called agency costs. Agency costs are normally larger for multinational companies than for purely domestic firms. Why? Because obviously आपके multinational companies में आपके जो financial managers हैं, one might be sitting in Pakistan, other one might be sitting in Europe, third might be sitting in America. So obviously, say for example, parent company is in America और जो बाकी subsidiaries हैं, they are in Pakistan, India, Bangladesh and some in Europe, for example Italy, Germany and UK. So what will happen? मॉनिटरिंग ऑब्वियसली अमेरिकन इकोनॉमी में अमेरिकन कंपनी की जहां पे आपकी पेरेंट कंपनी है वो तो एक इजी जॉब है, बिकॉज आपके सामने आपकी कंपनी है, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं मैनेजर की परफॉर्मेंस को और देख रहे हैं कि मैनेजर्स गोल अचीव कर रहे हैं या नहीं। However, अगर आपके पास सब्सिडरी कंपनीज हैं जिसमें से आपकी सब्सिडरी कंपनीज फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सम यूरोपियन कंट्रीज में है, what will happen? Obviously you have to involve huge costs. तो costs ज्यादा हो जाएंगी अगर आपके पास multinational setup है. The difficulty in monitoring distant managers. So not only the costs we are talking, the costs will be higher. However, on the other side, it is very difficult to monitor the managers who are sitting not in your country but in other countries. So you have to make proper strategies where you can see that whether the managers sitting in other countries are performing well or not. The different cultures of foreign managers. Obviously, it is also difficult that how would you monitor different managers who are coming from different backgrounds, and since उनके backgrounds different हैं, हर culture different है आपके finance manager का या foreign managers का, तो obviously there is a possibility कि उनके goals या उनकी thinking are different from your goals and your thinking.
अमेरिकन कंट्री में आपकी पेरेंट कंपनी अवेलेबल है, आपके जो मैनेजर्स या फाइनेंस मैनेजर्स अमेरिका में हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उन फाइनेंस मैनेजर्स की ओपिनियन डिफरेंट है उन मैनेजर से जो कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में बैठे हैं. Then a last point is the sheer size of the larger MNCs. Obviously, since the MNCs are having large setups, so obviously it is difficult to monitor, plus agency costs will be higher. Conflict with MNC's goals. Subsidiary managers may be tempted to make decisions that maximize the value of their respective subsidiaries. So, if for example आपके पास पेरेंट कंपनी ने 3 सब्सिडरीज ओपन की हैं, सब्सिडरी ए, सब्सिडरी बी, सब्सिडरी सी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपके फाइनेंस मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सिडरी मैनेजर्स मे बी टेम्प्टेड to make decisions that maximize the values of their respective subsidiaries. कि पेरेंट कंपनी तो एक है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स हर पेरेंट कंपनी ने डिफाइन करने हैं. पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरीज, सब सब्सिडरीज को बताना है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और वही ऑब्जेक्टिव सब सब्सिडरीज ने फॉलो करने हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज फाइनेंशियल मैनेजर्स जो कि आपके पेरेंट कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स की रिगार्ड नहीं करते, एंड दे आर बेसिकली ट्राइंग टू अवॉइड, और दे आर जस्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड. However, they are focusing more on the objectives of their own subsidiary company. के parent company अमेरिका में बैठी हुई है, आपकी subsidiary company is working in India या पाकिस्तान में काम कर रही है. फाइनेंस मैनेजर की जॉब है कि वो अमेरिकन कंपनी जो पेरेंट कंपनी है उनके ऑब्जेक्टिव्स को लेके पाकिस्तान में या इंडिया में जो आपकी सब्सिडरी कंपनीज हैं उनको फ्लरिश करवाए या फिर उनको ग्रोथ रेट्स को इम्प्रूव करे. However, in this case, we are discussing कि finance manager, rather than accepting or focusing on the MNC's goal, जो आपके major parent company के goals हैं, finance manager जो पाकिस्तान में बैठे हैं या जो इंडिया में बैठे हैं, वो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी या पाकिस्तान इकोनॉमी को फोकस करके अपने goals बना रहे हैं और टारगेट्स उस तरह से अचीव करना चाहते हैं. What will happen? Obviously, पेरेंट कंपनी वुड से कि मैंने आपको बिजनेस पाकिस्तान में इन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स पे नहीं बल्कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे वर्क करने के लिए दिया है, और आपको अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स और सारे रूल्स मेन जो आपकी पेरेंट कंपनी है उनके अकॉर्डिंगली डिजाइन करने हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपने कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करना है और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है. सो इफ that is the case कि आपके finance managers are basically trying to work in those environments where they are sitting and they are not focusing on the main goals of the parent company, so there are chances कि agency problems arise करेंगे. Now we will discuss that how parent company can eliminate or avoid the agency problems. The parent company of an MNC may be able to prevent agency problems with proper governance. What they can do? One thing, they can clearly communicate the goals of the multinational companies. So उनको अपनी सब subsidiaries में या जितनी भी उनके साथ companies involved हैं in business in different companies, either they are in different countries, parent company को अपनी सब subsidiaries को advise करना है, and then they have to clearly communicate, बहुत क्लियर वे में कम्युनिकेट कर दें जो आपकी पेरेंट कंपनी या मल्टीनेशनल के मेन गोल्स हैं. आफ्टर कम्युनिकेटिंग द मेन गोल्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, अब आपकी पेरेंट कंपनी की क्या जॉब है कि उन्हें मॉनिटरिंग करनी है उन तमाम सब्सिडरीज की जो कि डिफरेंट कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं कि वो आपके मल्टीनेशनल कंपनी का जो मेन सेटअप है उनके रूल्स, उनकी रेगुलेशंस और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. अगर आपको ये महसूस होता है कि ये कंट्रीज या फिर इन कंट्रीज में जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस तो उनकी अच्छी हो सकती है लेकिन ड्यू टू सम रीजंस दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑफर देम compensation plans and reward them with something. So subsidiary managers can be
basically start working to work with the main goals of MNC. जब आप उनको compensate करेंगे, से for example आप उनको bonus दे देते हैं, for example आप थोड़े से अपने उनके साथ leave लेने के rules को relax करते हैं, या फिर आप उनको थोड़ी सी flexibility देते हैं जॉब में, या फिर आप उनको reward देते हैं जॉब में. Obviously आपके finance manager, if they are satisfied with their job remuneration या फिर जॉब से उनको जो benefits मिल रहे हैं, so there is a possibility कि आपके finance manager आपके objectives achieve करेंगे. To provide managers with MNC stock, that is another option कि आप अपने managers को जो आपकी general prices हैं उनसे थोड़ी reduced prices के ऊपर multinational company के जो shares हैं वो offer कर सकते हैं, so that they can also take the benefit of those stocks, or they can also be compensated against their services. If still you feel that there is a possibility to arise a conflict, what will happen? Obviously अगर आपकी कंपनी में still you find it कि एजेंसी प्रॉब्लम अगर हो रहे हैं या होने के चांसेस हैं, what you will do is in that case you can clearly talk about the performance of your company's manager or company's performance, and you can discuss it with the manager कि अगर आप अच्छा perform नहीं करेंगे, so obviously there is a possibility कि हमें अपना business wrap up करना पड़ेगा, या फिर अगर तो हमारे profits बहुत decline कर जाते हैं due to the conflict of interest, what will happen? Obviously कोई और company हमारी company को खरीद लेगी या acquire कर लेगी. In case of acquisition, due to the poor performance of MNCs, the new management will replace the managers. Why? Because जो भी नई acquisition होगी, आपकी कंपनी कोई और कंपनी acquire करेगी, they will definitely ask कि इस कंपनी की performance low क्यों थी, and when they will come to know कि कंपनी मैनेजमेंट ठीक ना होने की वजह से परफॉर्म नहीं कर सकी, in that case obviously जो नई कंपनी होगी they will replace the managers. Secondly, you can also talk about the complaint system in your organization with your subsidiary managers कि अगर आप सही परफॉर्म नहीं करेंगे तो obviously जो institutional investor आपकी कंपनी के हैं वो continuously focus कर रहे हैं on the performance of your company, and अगर आप सही तरह परफॉर्म नहीं करेंगे so there is possibility कि institutional investors आपके against complaint launch कर देंगे. And for that reason, there is a possibility कि poor managers को replace करना पड़े. So in the end, what will happen? If there are agency problems in your organization, managers are not working for the goals of MNC, जबकि वो के अपने goals achieve करना चाहते हैं. In one way, we have discussed कि उनके अपने objectives हैं, for their own benefits वो targets अपने बनाते हैं और अपने खुद को benefit देने के लिए company के objectives को avoid करते हैं या फिर उनको फॉलो नहीं करते. सेकेंड वे में वी हैव डिस्कस्ड कि अगर आपके सब्सिडरी मैनेजर्स रादर देन फॉलोइंग द गोल्स ऑफ द पेरेंट कंपनी वो क्या करते हैं कि वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज के गोल्स सेपरेट कर लेते हैं और अपने ही गोल्स जो उन्होंने खुद डिजाइन किए फॉर देयर ओन कंपनी सिटिंग इन एनी अदर कंट्री उनको अचीव करना चाहते हैं. अगेन इट कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो दोनों केसेस में वेदर आपके मैनेजर अपने बेनिफिट के लिए काम करना चाहते हैं या फिर आपके मैनेजर अपनी सब्सिडरी कंपनी को बेनिफिट देना चाहते हैं जबकि आपकी पेरेंट कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे. और जब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे सो ईदर या तो आपको मॉनिटरिंग करनी है बीइंग अ पेरेंट कंपनी. आफ्टर मॉनिटरिंग अगर आप ये समझते हैं कि आपके मैनेजर्स को बेहतर पैकेजेस देके या फिर उनको रिवॉर्ड करके आप टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, वेल एंड गुड, यू शुड गिव देम बेनिफिट्स. ऑन द अदर हैंड इफ यू थिंक दैट स्टिल दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो यू कैन क्लियरली कम्युनिकेट कि या तो कंपनी एक्वायर हो जाएगी बाय अदर कंपनी, एक्विजिशंस हो जाएंगी, या फिर जो आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं दे विल कंप्लेन अबाउट द पुअर मैनेजमेंट स्टाइल और द पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड देयर आर पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी रिप्लेस्ड. So when you know that what are agency problems, that there is a conflict of opinion, when you know that there are agency costs involved in the business because you have to monitor the managers, there comes a concept for the magnitude of agency cost that can vary due to the
management style. Now there are two different styles of management. One is your centralized management style, when you are having only one finance manager in your parent company, and that is looking after all the responsibilities of different subsidiaries. So आपका फाइनेंस मैनेजर, सिंगल फाइनेंस मैनेजर आपकी सब सब्सिडरीज के फाइनेंस मैनेजर होंगे. एक ही फाइनेंस मैनेजर सब सब्सिडरी कंपनीज को फोकस करेंगे और उन्हीं के लिए काम करेंगे. सो आपके पास अगर 3 सब्सिडरी कंपनीज हैं और एक पेरेंट कंपनी है, तो जो पेरेंट कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं वो ही बाकी सब्सिडरी के भी फाइनेंस मैनेजर हैं. दैट इज सेंट्रलाइज्ड सिस्टम. अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम. A decentralized system is the one where you feel कि आपके पास अगर एक पेरेंट कंपनी है और उसके साथ 2 या 3 डिफरेंट सब्सिडरी कंपनीज हैं. इन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम आपकी पेरेंट कंपनी के जो फाइनेंस मैनेजर हैं, ही इज नॉट वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर एज अ होल, वाइल जो आपकी सब्सिडरी कंपनीज हैं उन सब के फाइनेंस मैनेजर्स डिफरेंट होंगे. Let's take another look about the concept of this by the help of diagram. So centralized multinational financial management will be like this for an MNC with 2 subsidiaries. इस diagram में आपके पास 2 companies involved हैं, company A and company B. So subsidiary A is given on your left, subsidiary B is given on your right side. Financial manager of parent company जो है, he is in the middle और वो ही तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी. सो पेरेंट कंपनी की फर्दर सब्सिडरीज जो ए और बी हैं, उनके फाइनेंस मैनेजर वो ही होंगे जो आपके पेरेंट कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं. What will happen जब आप इस टाइप का सिस्टम रखेंगे कि आपकी फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड पे आप देखें कि आपकी कैश मैनेजमेंट एट ए इज controlled by the same person who is looking after the cash management of B. So obviously क्योंकि same person दोनों sides को deal कर रहे हैं, कंपनी A को भी और कंपनी B को भी, तो obviously उनके objectives same होंगे. Secondly, when he will be dealing with inventories and account receivables for company A, here is the same person who is dealing for the inventory and account receivable for the company B also. What will happen? So obviously the same person is performing the duties for the parent company and for all the subsidiary companies. So standardized type के जो आपके goals होंगे, he will be following that because he knows it कि वो एक parent company के employee हैं जिनकी further subsidiary companies हैं, and he has to work with the objectives of the parent company and he has to achieve the goals for the MNC. आपके जब आपके पास एक सेंट्रल सिस्टम होता है जिसमें आपके फाइनेंस मैनेजर इज in the middle, he is the central part and he is basically looking after all the objectives and all the workings of financial activities of company A and financial activities of company B. So what will happen? Obviously there are no chances of having agency problems, और इन केस अगर अराइज होंगी भी तो वो बहुत माइनर होंगी बिटवीन दिस मैनेजर एंड आपके जो मेन एमएनसीज के ओनर्स हैं. हाउएवर सब्सिडरीज के दरमियान आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का चांस नहीं है. नाउ लेट्स मूव टू द डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम. In this case, now you can see that decentralized multinational financial management system is given in this slide, where the multinational company is having two subsidiaries. The difference between the previous slide and this slide is कि पिछली slide में आपके पास एक finance manager थे जो कि center में work कर रहे थे for both subsidiary companies. However, इस स्लाइड में आप देखें जहां पे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, सो इसमें आपके फाइनेंस मैनेजर ऑफ ए जो हैं वो डिफरेंट हैं फाइनेंस मैनेजर ऑफ बी से. व्हाट विल हैपन इन दिस केस? ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड कि या तो फाइनेंस मैनेजर ए या फाइनेंस मैनेजर बी की पॉसिबिलिटी है कि उनका कॉन्फ्लिक्ट आ जाए विद देयर शेयर होल्डर्स, और या फिर जो ओनर हैं कंपनी के उनके साथ प्रॉब्लम आने का चांस है, एजेंसी प्रॉब्लम. ऑन द अदर हैंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपके कंपनी ए और कंपनी बी की जो परफॉर्मेंस है वो सेम नहीं है और उन दोनों मैनेजर्स की ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट है.
So again there is a possibility कि आपके पास एजेंसी प्रॉब्लम्स अकर होंगे. Considering from the parent company कि जो आपकी पेरेंट कंपनी है उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी के वैल्यू इंक्रीज करनी है और शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करनी है. नाउ दे वांट कंपनी ए एंड कंपनी बी टू basically follow the same conditions and follow the same terms and follow the same regulations which parent company is following. However, क्योंकि उनके पास एक पेरेंट कंपनी है और डिफरेंट सब्सिडरीज हैं जिनके फाइनेंस मैनेजर्स भी डिफरेंट हैं, in that case there is a possibility कि इन मैनेजर्स के डिफरेंट होने की वजह से obviously एजेंसी प्रॉब्लम अकर होने के चांसेस हैं. What will happen? In that case agency costs will be higher. आपके पेरेंट कंपनी को एजेंसी का कॉस्ट्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में उन्हें एक नहीं बल्कि दो मैनेजर्स को मॉनिटर करना है. So जहां दो डिफरेंट मैनेजर्स को मॉनिटर करना है, से फॉर एग्जांपल बोथ द मैनेजर्स आर इन डिफरेंट कंट्रीज, सो एजेंसी कॉस्ट्स विल बी हायर. Some MNCs attempt to strike a balance. They allow subsidiary managers to make the key decisions for their respective operations, but the parent's management monitors the decision. So in easy words, sometimes आपकी जो parent company होती है वो finance manager को एक target या balance दे देती हैं, and then they ask the finance managers subsidiary companies के जो हैं कि आप decision ले सकते हैं. बट देन जो पेरेंट कंपनी है वो फाइनेंस मैनेजर की परफॉर्मेंस को और उनके डिसीजन को मॉनिटर करती है टू सी वेदर द मैनेजर इज वर्किंग इन द सेम लाइंस वेयर द पेरेंट कंपनी वांट्स और नॉट. Today, electronic networks make it easier for the parent to monitor the actions and performance of its subsidiaries. So, since we discussed कि आपके एजेंसी कॉस्ट्स हायर होंगी फॉर द पेरेंट कंपनी क्योंकि आपके मैनेजर्स डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल हैं. But due to the internet facility and electronic networks, it is becoming a bit easy for the parent companies to monitor the actions of your managers who are your subsidiary managers, maybe sitting in other countries since these are your foreign subsidiaries. What the parent company can do to avoid the problem of agency costs and agency problems? One thing that being using since we know कि internet facility available है और by using the internet facility and your electronic system, they can establish a centralized database of information. तो अगर parent company का एक database जनरेट हो चुका है जिसमें उस पेरेंट कंपनी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, so that will help all the subsidiary managers to focus on those goals which are available in the database of information. Ensuring that all data are reported consistently among subsidiaries. Now, making data or construction of data is one job कि आपकी कंपनी ने एक database generate कर लिया है. The other job is, which is important one, that all the data must be reported consistently to among the subsidiaries. तो आपने same data को अपनी तमाम subsidiary में communicate करना है और उनको कंसिस्टेंटली बताना है कि आपके डेटाबेसेस जनरेट हो चुके हैं एंड दे हैव टू फॉलो दीज इंफॉर्मेशंस नाउ. Implementing a system that automatically checks data for unusual discrepancies relative to norms. So आप ये भी कर सकते हैं कि एक ऐसा बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन कर लें जिसमें आपकी यूजुअल जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या यूजुअली जो आप एक्सपेक्ट करें ट्रांजैक्शंस, उनसे अगर वैल्यूज़ डिविएट हों तो वो आपको अलार्म कर दे उस सेंस में कि आपकी वैल्यूज़ या डिस्क्रिपेंसीज अकर हो रही हैं. Say for example, implementing a system that automatically checks for data for unusual discrepancies. तो अगर तो आपका डेटा नॉर्मल रेंज में मूव कर रहा है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम योर मैनेजर्स, दैट्स फाइन, बट जो डेटाबेस आपने फॉर्म किया है उसमें अगर कोई बहुत ज़्यादा आउटलायर वैल्यू आ रही है या फिर डिस्क्रिपेंसी आ रही है, देन यू हैव टू फोकस ऑन दैट.
speeding the process by which all departments and subsidiaries have access to the data and they need. Speed up हो जाएगा इस चीज से process, because आप जब database generate कर लेंगे तो जो subsidiaries किसी भी country में बैठ के finance manager काम कर रहे हैं, rather than calling you या फिर directly आपसे communicate करने की बजाय वो आपके database को access करेंगे और उससे information लेके speed up कर देंगे अपनी efficiency की process को और profits generation को. Making executives more accountable for financial statement by personally verifying their accuracy. You have to verify the accuracy of accounting system in your company, and जितनी भी आपकी statements हैं उनको आपने personally check करना है. और अगर कोई discrepancy या कोई problem हो, then the executives who are in your company or the managers who are in your company must be responsible for those discrepancies or problems. Now we have discussed different forms of corporate control that can reduce agency problems. First of all, we discussed that you can give them stock options, कि managers को आप stock options offer कर दें, उनको बता दें कि आपको reduced costs के ऊपर आप उनको अपनी company के stocks offer कर रहे हैं. So that can be a benefit for the managers, and there is a possibility that the manager will get this benefit and work for the goals of MNCs. You can also inform them about the hostile takeover threat, that if you will not function, if you will not perform properly and the company will not function properly, what will happen? That there is a possibility that some other company will do the acquisition and acquire your company, and it is a threat for the manager also, because poor management या poor management style की वजह से नई आने वाली कंपनी आपके मैनेजर को भी रिप्लेस कर देगी. Then investor monitoring, that there is a possibility कि जो आपके institutional investors हैं, they will complain about something or the poor management style, and they will ask the board of governors that you should replace your managers. So until now we have discussed that आपके जो managers हैं और जो आपके owners हैं company के, उनके दरमियान agency problem आने का chance है. However, on the other side, अगर हम managers के point of views देखें regarding international businesses, so there are different things that can be confronted with the managers. Say for example, multinational companies managers are confronted with various constraints. जो constraint are things that can basically stop you or that can slow down your activities. Environmental constraints. आपकी कंट्री में या पेरेंट कंपनी जो काम कर रही है वहाँ environment different है from the country where the subsidiary is working. Environmental laws in America are different from the environmental laws of India or Pakistan. So obviously जो आपका मैनेजर आपके साथ काम कर रहे हैं पेरेंट कंपनी में, it is getting difficult or sometimes it gets a constraint for them कि आप दूसरी जो सब्सिडरी इकोनॉमीज हैं वहां पर आपके एनवायरमेंटल लॉज या एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं उनको इतना फोकस नहीं किया जाता. रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज आर डिफरेंट इन अमेरिका देन इन पाकिस्तान और इंडिया. सो जो मैनेजर आपके पेरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं उनको रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स भी फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज द लॉज इन अमेरिका आर डिफरेंट फ्रॉम द लॉज इन India, Pakistan, Bangladesh or any other country. Ethical constraints are also there. For example, the manager has to face ethical type of constraints also. And say for example, there is a possibility that आपके language barriers भी आ जाते हैं कि अगर आपके manager, for example, अगर आपके parent company के manager is sitting in America, since he is a native speaker of English language, however, when he is dealing in China or any other country, so he might get the language problem or language constraint also. And along with that, ethical issues are also related in constraints. So the manager in MNC will face problems regarding environmental constraints, where environment is different between the two countries where the business is running. Regulatory constraints, where the rules and regulations are different in different economies. And ethical constraint, because the ethics are also different in many countries.
A recent study found that investors assigned a higher value to the firms that exhibit high corporate governance standards and are likely to obey ethical constraints. So वो countries या वो companies जो कि ethical constraints को focus करते हैं, obey करते हैं ethics को किसी दूसरे country के, so there is possibility that they will get extra benefits. So let's discuss about the theories of international business. Why are firms motivated to expand their business internationally? Number one is theory of comparative advantage. Number two, imperfect market theory. And number three, product cycle theory. First one is comparative advantage theory. It allows firms to penetrate into foreign markets because the specializations by countries. So for example, one country has specialized in certain product or service, और क्योंकि वो product इतना specialized है by that country that they have got the edge कि अब आप उस product को लेके international criterias पर move कर सकते हैं. So for example, किसी country में कोई एक product किसी producer ने इस स्टैंडर्ड का बना लिया है, लाइक जापान में आप ये देख लें कि कार्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके माइंड में नाम आता है जापानीज कार का. सो दे हैव गॉट द कंपैरेटिव एडवांटेज बिकॉज जापान में जो कार्स बन रही हैं दे आर द बेस्ट कार्स एंड एवरीवन कंसिडर वेदर यू हैव गॉट अ जापानीज कार और नॉट. सो दे हैव गॉट द स्पेशलाइजेशन इन देयर कंट्री इन ऑटोमोबाइल बिजनेस. दैट इज देयर कंपैरेटिव एडवांटेज. अब उसमें आपके साथ बेसिकली कंपटीशन बहुत कम रह जाता है. व्हाई? बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग दैट स्टैंडर्ड और दैट क्वालिटी कि कंपैटिटर्स उस स्टैंडर्ड पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते. व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली यू कैन इंप्रूव योर एफिशिएंसी एंड यू आर गिविंग मोर एफिशिएंसी इन दैट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट. So comparative advantage theory is something when some country has got the specialized type of product or service, and we have discussed the example of Japanese cars that they have specialized in their automobile industry and that they are basically enjoying that benefit. Now let's talk about the technological type of products. So always the names coming in your minds are US, Japan or any country who are producing the best technological products. However, if you are talking about the agricultural economies, so Mexico and Jamaica are the countries which might come in your mind that these are the countries who are specializing in these types of products. So to get a comparative advantage, your country must be very good in the production of that particular product or service. So you are basically getting the comparative advantage. Second theory is imperfect market theory. If markets are perfect, so what will happen? That the factors of production will be freely mobile and equality of costs and returns will be there. And everyone knows that this is not the case, and it is impossible to have a mobile factors of production. In real world, the factor of productions are immobile, कि आप उनको move नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह. Imperfect market provides incentive to seek foreign opportunities, where factors of productions are immobile. So obviously जब imperfect market होगी तो दूसरे countries में जो resources available हैं for the production, they will be attracted by the investors or by the companies. Okay, why not to go in that countries and use those sources and produce the products? So countries differ in terms of resources, and these are those resources which we are saying they are immobile. So when these resources are immobile, so obviously countries are getting an edge that they are having those resources which are not available in other countries. So costs and restrictions are available to the labor also. So there is a benefit if you can get cheap labors in other countries. Restriction on transferring funds and other sources. MNCs like Nike and Gap capitalize on foreign resources.
So if the factors of production are immobile, there is also a possibility that you will move towards the international business to use the resources available in other countries. Finally, there is another theory which is called product cycle theory. Now, what is product cycle theory? As a firm matures in home market, it may recognize additional opportunities outside its home country. So as we know कि अगर आपकी कंपनी ने पाकिस्तानी मार्केट को completely grab कर लिया है और benefits मिल रहे हैं, profits बहुत high level पे generate हो रहे हैं, that means उस कंपनी ने home market में maturity achieve कर ली है और additional opportunities के लिए अब ये कंपनी move करना चाहती है in foreign countries. That is your product cycle theory. And it can move to the foreign countries by exporting their products. However, in this case, the competition will increase in foreign markets. जब आप अपना कोई बहुत अच्छे क्वालिटी का स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज में लॉन्च करेंगे, से फॉर एग्जांपल अगर उस प्रोडक्ट के लॉन्च करने के बाद वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, सो देयर इज ब्राइट चांस दैट यू विल ऑल्सो फेस द कॉम्पिटिशन ओवर देयर, बिकॉज दूसरे कंपनीज भी फॉलो करेंगे टू प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट और फॉरेन कंट्री में आपका कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा. नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी. एक तो ये कि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर दें, देन यू कैन सस्टेन, और स्ट्रेटजीज बना लें कि आपने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है अपने कंपैटिटर के प्रोडक्ट से. So the job of the manager would be to differentiate their product from the product of their competitors to sustain in the market. If yes, you are successful doing that you can differentiate your product from the other ones, so there is a possibility that you will sustain in the market. However, on the other side, अगर आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, सेम लेवल के ऊपर कोई कंपटीशन कर रहा है और लो प्राइसेस ऑफर कर रहा है आपके प्रोडक्ट से ज्यादा, then there is a possibility that if you cannot differentiate product from the other competitor's product, you have to wrap up your business or the profits will decline. So in product cycle theory, first thing that you basically mature in your domestic market, और अपनी domestic market में mature होने के बाद आप international market में जाते हैं. आप अपना product जब international market में launch करते हैं by exports, so competition increase होने के chances हैं. जब competition increase होगा, then you can design strategies whether to stay in the market by differentiating your product from your competitor's product, or in other case you can leave the market because you couldn't differentiate your product or the profits will become low. Now let's have a review of this lecture and discuss what we have discussed till now. Goals of MNCs. As we have discussed कि आपके MNCs के मेन गोल्स क्या होंगे. फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस्ड कि MNCs के मेन ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि वो अपनी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं अलोंग विद द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. कि एक तो ये कि आपके MNCs या जो पेरेंट कंपनी है वो ये चाहती है कि आपके फाइनेंस मैनेजर इस तरह से काम करें कि आपकी कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करें, और जब आपकी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी उसी के साथ आपकी कंपनी के शेयर्स भी एक्सपेंसिव या उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. जब आपके शेयर्स की वैल्यूज इंक्रीज होंगी, सो ऑब्वियसली यू हैव टू शेयर योर प्रॉफिट्स विद योर शेयर होल्डर्स. दैट मीन्स यू विल बी गिविंग देम मोर डिविडेंड्स. When you will be giving more dividends to your shareholders, that means you are increasing the wealth of your shareholders. So the two particular goals are, one, to increase the value of the firm, second, to increase the wealth of your shareholders. Then we discussed the agency problem. What is agency problem? That when there is a conflict of opinion between the owner of the company and the manager of the company. Maybe the manager is trying to
perform his duty according to the standard so that he should get benefit more than the company. In that regard, there is a possibility that the conflict of opinion will occur between the owners of the company and the manager of the company. If there is a problem between manager and the owner, which is called agency problem, so the job of the parent company is to monitor the functions of the manager, which is called agency costs. When you have to basically deal with agency costs, then we had discussed two types of management styles or management systems. If the parent company or the MNC is having centralized type of system, in that case जो आपके फाइनेंस मैनेजर होंगे वो तमाम की तमाम सब्सिडरी कंपनीज के भी फाइनेंस मैनेजर होंगे. That means parent company के finance manager will look after all the duties of subsidiary A, subsidiary B and subsidiary C of the company. In that regard, आपके पेरेंट कंपनी के फाइनेंस मैनेजर एक सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हुए बाकी कंपनीज के भी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. However, on the other side, decentralized system में पेरेंट कंपनी अथॉरिटीज दे देती है डिफरेंट सब्सिडरीज को दैट दे शुड हैव देयर ओन फाइनेंस मैनेजर्स. सो दैट मीन्स अगर पेरेंट कंपनी के पास 2 या 3 सब्सिडरी कंपनीज हैं, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में उनके फाइनेंस मैनेजर्स जो कि कंपनी ए के फाइनेंस मैनेजर, कंपनी बी के फाइनेंस मैनेजर और कंपनी सी के फाइनेंस मैनेजर्स सेपरेट होंगे. एक ही मैनेजर तीनों कंपनीज के ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे. In that case, agency costs की अगर हम बात करें, so obviously it is quite easy to focus on centralized system since you have only one finance manager. जबकि अगर आपने agency costs को चेक करना है in decentralized system, in that case आपकी agency costs बहुत ज्यादा होंगी. Then we also discussed the theories of international business. First, we discussed the comparative theory. What is comparative theory? Comparative advantage is something where your country is having a specialized type of product or service जिसका standard इतना high है कि वो international level के ऊपर compete कर सकता है. And you are basically enjoying the benefit of comparative advantage. We discussed the example of Japanese automobiles functions where we discussed कि आपके Japanese automobile industry में इतनी specialization है कि all over the world Japanese cars की demand बहुत ज़्यादा है. That means कि आपने specialized products में all over the world अपने targets achieve करने हैं. कंपैरेटिव एडवांटेज जापानीज ऑटोमोबाइल्स के पास ये है कि उनका प्रोडक्ट इतना स्पेशलाइज्ड है दैट दे कैन एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस एंड दे कैन अचीव हाई टारगेट्स रिगार्डिंग देयर प्रॉफिट्स. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट. सिंस वी नो दैट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर immobile and every country is different in terms of resources they have, so to achieve or to work with those immobile resources in other countries, you can move to that particular country and take the benefit of those resources, which is called the theory of your imperfect market. And on the standard or on the basis of imperfect market theory, you can start your business on international level or in the foreign countries. Finally, we also discussed the theory of प्रोडक्ट साइकिल कि अगर आपका प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में अपना स्टैंडर्ड या अपने टारगेट्स अचीव कर चुका है और मैच्योर हो चुका है, व्हाट विल हैपन दैट योर प्रोडक्ट इज रेडी टू बी लॉन्च्ड इन फॉरेन कंट्रीज. व्हेन यू विल लॉन्च योर प्रोडक्ट इन फॉरेन कंट्रीज, since you have achieved the targets in your domestic market and your product has been matured in your domestic market, that means you are basically trying to capture the foreign market, or is market mein you are trying to maintain the standard. Now this is quite obvious that when you will be having your international market standards, so there will be competition along with that.
there are two possibilities. अगर तो आप उस competition को face कर सकते हैं in foreign markets, so that means that you have to differentiate your product from the product of your competitors. If you will be successful in achieving that, you can differentiate your product from your competitor's product. That means you can survive in that foreign market. कि अगर आपका प्रोडक्ट आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो गया तो आपने अपनी जॉब परफॉर्म कर दी है, then you can sustain in that particular foreign market. However, on the other side, if you are unable to differentiate your product from your competitor's product, and that means either you have to leave that foreign market or your profits will be declined.